ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋರ್ಗಾಗಿ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಸೋಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷದ ಪಾಠ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಊಟದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಈಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಲೈಕ್ ದೋಸಾ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಥರ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಬರೀ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದರ ಶುರುವಾತೆ ಬೇಸಿಕ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಊಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಫ್ರೂಟ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ರೈಸ್, ಚಪಾತಿ, ಕರಿ, ಈ ತರಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದೇನು, ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪೋಹಾ, ಪುಲಾವ್, ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಈ ತರಹ ಪದಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿವರಣೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಪದ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ಏನದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈ ತರಹ ಪರಿಚಿತ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯನ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಕರಣ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಐ ಲೈಕ್ ದೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಐ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐತಲ್ಲ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಾನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರಹ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ರಚನೆಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೈಜ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರಿ. ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇವು ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿನೇ. ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಗಳು 100% ನಿಜ ಜೀವನದ ತರ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ. ಅವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ಈ ತರ ದಿನಾ ಬಳಸೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗೋ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಐ ಆಮ್ ಈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಾನು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದರ ನೇರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರಚನೆ ಐ ಈಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವು ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಿಜ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ವಿಧಾನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರಾಮರು, ವಿಜುವಲ್ಸು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ನು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದೇನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷಾ
ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರೋ ಕಲಿಯೋರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಈಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಧಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ಕಲಿಯೋರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಆದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. नमस्ते, आज हम एक खास स्क्रिप्ट पर बात कर रहे हैं. हाँ, ये अंग्रेजी सिखाने वाला एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो कुछ खास भारतीय भाषाएं बोलने वालों के लिए है. जी हाँ, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगु बोलने वालों के लिए. और इसका विषय है, आप कह सकते हैं, खाने पीने की रोजमर्रा की बातचीत अंग्रेजी में. काफी रिलेटेबल टॉपिक है. तो आज हम इसी को गहराई से देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट असल में कैसे काम करती है, क्या तरीके अपनाती है और सीखने वालों के लिए इसके क्या मायने हैं. बिल्कुल, यही इरादा है. चलिए शुरू करते हैं. तो स्क्रिप्ट का जो पहला हिस्सा है वो काफी बुनियादी है. हाँ, मतलब दिन के खाने के नाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. और साथ में कुछ आम भारतीय खाने की चीजें, इडली, डोसा, रोटी, सांभर, पोहा, इन सब के अंग्रेजी नाम. अच्छा. और बहुत ही सरल वाक्य हैं, जैसे I eat breakfast at 8 AM और फिर दोहराने को कहा गया है. काफी सीधा सा लगता है ये तो. हाँ, तरीका तो सीधा है और इसमें जो सिखाने का मेथड है वो काफी प्रैक्टिकल है, खासकर जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके. प्रैक्टिकल कैसे? मतलब विजुअल्स वगैरह? हाँ, जैसे स्क्रिप्ट में जिक्र है खाने की तस्वीरों का या फ्लैश कार्ड्स का, और दोहराव पर काफी जोर है. व्याकरण भी बिल्कुल बेसिक, जैसे आई लाइक या आई डोंट लाइक. अच्छा, इसमें एक और बात थी, मूल भाषाओं से तुलना. जैसे कन्नड़ का ननगे दोसा इष्टा आयदे और अंग्रेजी का आई लाइक डोसा. क्या ये तरीका काम करता है वाक्य रचना समझाने के लिए? कहीं ये ज्यादा ही सरल तो नहीं हो जाता? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है. शुरुआती लेवल पर, खासतौर पर जब आप SOV सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर जा रहे हों, जैसे हिंदी या कन्नड़ से अंग्रेजी में, हाँ. तो ये सीधी तुलना, मतलब वाक्य का ढांचा समझने में शायद मदद करती है. शायद. हाँ, क्योंकि देखिए, भाषा सिर्फ शब्दों का क्रम तो है नहीं, उसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं. तो हाँ, ये एक तरह की शुरुआती मदद है, पर पूरी कहानी नहीं बताता. जटिल वाक्य या भाव शायद इससे न समझ आए. समझ गई. अच्छा, फिर स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है रोजमर्रा की स्थितियों पर. हाँ, वो असल जिंदगी वाले उदाहरण, जैसे स्कूल में लंच टाइम पर दोस्तों की बात, अरुण और मीना, या फिर होटल में खाना ऑर्डर करना राजू और वेटर के बीच. बिल्कुल. और इसमें उपयोगी वाक्य सिखाए गए हैं, जैसे आई एम हंग्री, दिस इज टेस्टी. प्लीज पास द वाटर भी था शायद. हाँ, और विनम्रता पर भी ध्यान है, प्लीज, थैंक यू का इस्तेमाल. ये स्थितियों का चुनाव तो अच्छा है, मतलब कनेक्ट कर पाएंगे लोग. हाँ, चुनाव अच्छा है. स्कूल, होटल, ये आम जगह हैं. लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या ये डायलॉग थोड़े ज्यादा ही परफेक्ट या स्क्रिप्टेड तो नहीं लगते. हाँ. असल बातचीत तो थोड़ी ज्यादा बिखरी हुई होती है ना. हाँ, ये बात तो है. इतनी सीधी लाइनें कौन बोलता है असल में. अच्छा, एक और बहुत जरूरी हिस्सा था, गलतियां सुधारना. हाँ, वो L1 इंटरफेरेंस वाला. जैसे बताया गया है कि आई एम ईट राइस नहीं, बल्कि आई ईट राइस सही है. या ही नॉट लाइक फूड गलत है. सही है. ही डज नॉट लाइक फूड. हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे सीधे पहली भाषा के असर से होने वाली गलतियों पर फोकस कर रहा है. जैसे हिंदी में हम सहायक क्रिया अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. होना क्रिया का प्रयोग अंग्रेजी के बी वर्ब से काफी अलग है. इसी से आई एम गो, आई एम ईट जैसी गलतियां होती हैं, और नेगेटिव वाक्य बनाने का तरीका भी फर्क है. तो स्क्रिप्ट का इन पर ध्यान देना तो अच्छी बात है. हाँ, ये दिखाता है कि बनाने वालों ने टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखा है. पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ गलतियों को ऐसे पॉइंट आउट कर देना काफी है, या मतलब भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखने का माहौल देना बेहतर होता है. रटना बनाम समझना वाली बात आ गई फिर से. हाँ. स्क्रिप्ट में होमवर्क भी दिया है, जैसे खाने की रूटीन लिखो या आईने के सामने बोलो. हाँ, एक्टिव प्रैक्टिस. क्या ये काफी है सीखने को पक्का करने के लिए? देखिए, एक्टिव प्रैक्टिस जरूरी तो है, इसमें कोई शक नहीं. लिखने से, बोलने से चीजें याद रहती हैं. आईने के सामने बोलने से शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़े. लेकिन
लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस इस पर निर्भर करती है कि कोई इसे कितनी रेगुलरली और सीरियसली करता है। और शायद थोड़ी और वैरायटी हो सकती थी, जैसे किसी दोस्त से बात करना या असल में बाहर जाकर ऑर्डर करने की कोशिश करना। सही बात है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो इस स्क्रिप्ट की खासियत ये है कि इसने खाने जैसे एक जाने पहचाने विषय को लिया बिल्कुल यूनिवर्सल टॉपिक। और उसे भाषा सीखने वालों के लिए छोटे-छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट दिया है। प्रैक्टिकल सिचुएशन और आम गलतियों पर फोकस रखा है। हाँ, इससे ये टारगेट ऑडियंस के लिए काफी रेलेवेंट बन जाती है। जी। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। ये जो तरीका है स्ट्रक्चर्ड, कॉन्टेक्स्ट वाला, रोजमर्रा की अंग्रेजी सिखाने का, ये उस तरीके से कितना अलग है जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर असल में खाने के बारे में बात करते हैं। उनकी बातचीत तो अक्सर इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, ज्यादा इनफॉर्मल होती है, उसमें कल्चरल बारीकियां भी होती हैं। हाँ, वो तो है। तो सवाल यह है कि क्या शुरुआती लोगों के लिए भाषा को इतना सरल बनाने के चक्कर में खाने की बातचीत से जुड़ी जो सांस्कृतिक रंगत है, जो बारीकियां हैं, वो कहीं खो तो नहीं जाती? ये सोचने वाली बात। Welcome to the deep dive. What if the real secret to speaking a new language wasn't just endless grammar drills? What if it was simply, well, what you ate last night? Today, we're diving into a really fascinating approach. It uses food, something totally universal, as a kind of shortcut to fluency. Now, you asked us to look at a specific source, this video module, talk about food and meals in English, daily conversations for everyone. It's week 5 of a Spoken English Journeys series. Yeah. So our goal today really is to dig into this module, pull apart its design, see how it's put together, and figure out how it actually helps learners get confident talking about, well, just daily life. Right. And what's really key here, I think, is looking beyond just what they teach. It's about the method, isn't it? How it's presented to actually, help people use it in the real world, especially when you're talking about bridging cultures and languages. Yeah. That how can be, well, maybe even more important than the what. And this module seems to get that, intuitively almost. Okay, so let's unpack this. Where does it start? Not with anything too complex, it seems. No, it kicks off with the real basics. Things we use every single day. Fundamental stuff. Breakfast, lunch, snacks, dinner, simple meal names, and then common items like drink, fruit, vegetables, rice, chapati, curries. And they use these like example sentences repeated. I eat breakfast at 8 a.m. Lunch is at 1 p.m. It feels very much designed for quick pickup, anchoring the concepts. But what makes this basic approach maybe uniquely effective, especially for this audience? Well, what's really fascinating, I think, is how quickly it grounds the learning in the learner's actual world. It doesn't just stick with, generic examples. It makes this really smart strategic move. It pulls in common Indian foods in English almost straight away. We're talking idli steamed rice cakes, dosa rice pancakes, sambar spicy lentil soup, poha flattened rice. This is brilliant because it speaks directly to the target audience, right? Canada, Tamil, Malayalam, Hindi, Telugu speakers. It makes the learning instantly feel relevant, accessible. And there are other examples too, like pulao, chutney, pickle, curd, buttermilk, goongli. Just imagine trying to learn English using only, say, apple and pizza. If your daily life is all about chapati and curry, it just wouldn't connect as fast, would it? No, absolutely not. It's such a direct line to relevance. Okay, so once the vocabulary foundation is there, the module then tackles grammar. And what I found compelling is how it simplifies things that often, trip learners up. It really zooms in on I like, I don't like, for expressing food preferences. Simple examples. I like dosa and chutney, or I don't like spicy food. It's just so straightforward, you can use it immediately. They even have the specific tip comparing Nanaj dosa ishta aide in Canada to the simple English, I like dosa. Really highlighting how direct English can be sometimes. It's almost like helping learners unlearn certain native structures for these specific cases. Exactly. And if you connect that to the bigger picture, it's all about empowering practical communication right from the start. Then the module moves into these role-play scenarios, which is great, starting with a pretty simple one. A school lunch chat between Arun and Meena. Some lines are basic, like, what did you bring for lunch today? Or do you like dal de scampi? They might seem kind of mundane, maybe, but these everyday chats are packed with learning opportunities. They build confidence for those typical low-stakes moments. Right, building confidence in those everyday scenarios is key. But I do wonder, does it push them beyond that? Or does it keep things mainly in that sort of safe zone? Oh, it definitely pushes them. It extends that comfort zone into more public situations. It builds on that foundation with what they call useful daily food sentences. Things like, I am hungry, let's eat, please pass the water, this is tasty. Oh, and the important one, I am vegetarian. Yeah, the advice is clear. Use these. Use them at home. Use them in restaurants with friends.
put it into practice right away. And this gets reinforced again with another role play, conversation at a hotel canteen. This one's between Raju, the customer, and a waiter. So it's demonstrating that very practical skill of ordering food using polite language like please and thank you. Right. These are the kind of immediate useful skills learners really need, aren't they? Things they can use tomorrow. Yeah, absolutely. So, okay, learners have these basic phrases. They're starting to use them. How does the module then handle the mistakes, those inevitable slip-ups, especially common ones? What does this focus on correction tell us about maybe the learning process they envision? That focus on specific errors is, I think, quite revealing. They give examples correcting things like I am eat rice to the proper I eat rice, or he not like food becomes he does not like food. Now, these might seem like small grammar points, but they're actually pivotal. Why these specific errors? Well, they likely come directly from interference, from the learner's native languages, direct translation issues. So addressing these gently, it stops learners carrying over grammar that just doesn't work in English. It helps them move beyond sounding, well, foreign and towards more natural fluency. It's about breaking old habits, building new ones. Breaking old habits. And it's not just pointing out errors, right? They include active practice, too. This practice time section, getting learners to repeat sentences out loud, reinforcing it physically almost. But while tackling specific errors is vital, is there maybe a risk? A risk of learners getting too hung up on being perfect, maybe losing the confidence to just communicate. That's a really good point. And I think the module anticipates that, actually. It balances correction with a more holistic approach. Look at the recap plus homework section. It really ties everything together, vocab, conversations, the whole package. And the homework, it's incredibly practical. Write down your food routine. Okay, it makes sense. But then practice ordering in a mirror. Might feel a bit strange at first, maybe. But it's so good for building that muscle memory, that confidence. And even teaching the new words to family members, that shows a real commitment to integrating the learning into daily life way beyond just watching a video. It fosters that comfort alongside the accuracy, you see. Yeah, definitely. As we've been unpacking this, what really stands out is just how, well, deep and practical this module's design is, isn't it? It takes this big goal, speaking confidently about food, and breaks it down into these manageable, really actionable steps. It makes something that could feel quite daunting seem achievable. Absolutely. It's a brilliant demonstration of how simple everyday things like sharing a meal can be such powerful ways into deeper understanding, both cultural and linguistic. It really underlines that it's not just about learning isolated words, it's about connection. It makes you think, doesn't it? How much of our daily lives revolves around food? And mastering even simple, practical language about it, well, it can open so many doors for connection, for understanding, really in any culture. It goes way beyond just the dinner table. Makes you wonder, what other universal experiences could be a similar kind of shortcut, if designed this thoughtfully, this culturally aware way, something to chew on, perhaps?